So the new chapter is prayers by Kunti, Queen Kunti and Parikshit saved. So अभी तक हम लोगों ने देखा है कि अश्वत्थामा ने, है ना, अश्वत्थामा ने उसके द्रौपदी के पांचों पुत्रों को मार दिया, लेकिन पांडवों ने फिर अश्वत्थामा को माफ कर दिया। और उसको माफ तो क्या करा, मतलब उसको पनिशमेंट दी। कैसी पनिशमेंट दी? उसके पूरा उसको गंजा करके और उसको उसकी मणि निकाल के उसको वहां से भगा दिया, है ना। सो उसके बस हम लोगों ने वो देखा था। उसके बाद अब सुद गोस्वामी क्या कह रहे हैं, विल स्टार्ट फ्रॉम टुडे, है ना। सो श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो 8th चैप्टर वर्स नंबर 1। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। भगवते I'll वासुदेव। tell you later. ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। So reading from Srimad Bhagavatam, first canto, 8th chapter, verse number 1. Suto vacha अथ अथ ते संपरेतानां स्वानामुदकमच्युतां दातुं स कृष्णगङ्गायां पुरस्कृत्य युयुस्त्रियः. Sut Goswami said, thereafter Pandavas, desiring to deliver water to the dead relatives who had desired it, went to the Ganges with Draupadi. The ladies walked in front. Anybody wants to read the purport? Yes, Prabhuji, I can read. Please. To date, it is Can you custom read the in Hindu translation again, society. Mataji, please? Sorry, Prabhu? Read the translation again. Okay. Suta Goswami said, thereafter the Pandavas, desiring to deliver water to the dead relative who had desired it, went to the Ganges with Draupadi. The ladies walked in the front. Purport. To date, it is custom in Hindu society to go to the Ganges or any other sacred river to take bath when a death occurs in the family. Each of the family members pours out a potful of Ganges water for the departed soul and walks in the procession, with the ladies in the front. The Pandavas also followed the rules more than 5,000 years ago. Lord Krishna, being a cousin of the Pandavas, was also amongst the family members. Hare Krishna. Hare Krishna. So obviously we know that जितने भी लोग मरे थे, सिर्फ अपने बच्चों का ही नहीं, बाकी जितने भी रिलेटिव्स थे सब लोगों को उन्होंने वाटर ऑफर करा, है ना। और इसका रीजन क्या था? टू डिलीवर वाटर टू द डेड रिलेटिव्स। नाउ अगर ये कोई नॉन डिवोटी पढ़ेगा और someone who does not understand the concept of reincarnation, punarjan, they will think how stupid is that? What is the water going to do to dead relative? इवन छोड़ो, नॉन डिवोटी तो छोड़ो, जो लोग स्पिरिचुअलिटी को मानते हैं, कई लोग वो भी नहीं मानेंगे। जैसे मेरी वाइफ, वो ये पढ़ेगी तो बोलेगी ये क्या है? जब somebody has died, how can you deliver water to, and what is the point of delivering water to someone who is dead, है ना। तो ये जो कस्टम्स, मोस्ट ऑफ द कस्टम्स दे आर इन हिंदू सोसाइटी और एनी लाइक वी शुड से सनातन सोसाइटी, है ना। वो क्या है? इट हैज सम वेरी स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक अंडरलाइनिंग फैक्टर्स, और वो हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी डिस्कस करा था बहुत डिटेल में, and I shared about my father's, my father's death. When he passed away, we did the last rites for him, and how therapeutic was that, and how many small little things जो बहुत ज्यादा दकियानूसी लगती थी मुझे, I realized as a human being, in order for me to process my emotions, some of those customs were extremely powerful, very scientific, and extremely, it actually gave me a um, closure to my father's passing away, you know. Now, so some of those customs that Prabhupada यहाँ पर बता रहे हैं, customs in Hindu society,
We go to Ganges. Ganges is considered to be a very sacred river, we all know, है ना? और why do we do that? उसके दो रीजन है. एक तो we want to pray for the departed soul, और दूसरा रीजन है कि we want to purify ourselves, because touching a dead body is not considered to be very pure. कोई बता सकता है why touching a dead body is not considered to be very pure? Why is it not pure to touch a dead body? No, nothing. Any guesses? क्या हो क्या सकता है? Nothing? Okay. You guys can hear me now? Yes, Prabhuji. Okay. So the reason why we don't touching a dead body is considered to be inauspicious. It's not considered to be inauspicious. It's actually considered to be, तो आप dead body को छूते हो तो then you have to have shower. Scientific reason इसका simple सा ये है, because as soon as a body is dead, soul leaves the body. The body is considered to be the most useless thing. क्योंकि ये जो बॉडी है, ये जो शरीर है, इसका एक ही काम है. हमारा जो शरीर हमें मिला, इसका एक ही काम है कि इस शरीर के द्वारा, with the help of this body, we can do certain actions, जिसको कहते हैं कर्म. We can do certain action जिसके कारण we can go back home, back to Godhead, and that is the only purpose and reason of this for this body. ठीक है? कोई भी चीज जिसका कोई पर्पस नहीं हो, it is considered to be very very inauspicious in भक्ति. एक श्रीमद् भागवतम का जो चतुर्श्लोकी भागवतम है, उसका जो सेकंड वर्स है, रते रतम यत् प्रतीयेता न प्रतीयेत चात्मनि तत्विद्यादात्मनो मायाम यथा भाषो यथा तमः. तो ये जो चतुर्श्लोकी भागवत है, ये भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को सुनाई थी. मतलब ये पूरी भागवतम, ये 4 श्लोक सुनाए थे, एंड इट इस 4 श्लोक में पूरी भागवतम है, मतलब इन द सेंस भागवतम का छोटा वर्जन. तो इसमें जो सेकंड वर्स है, रते रतम यत् प्रतीयेता न प्रतीयेता चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भाषो यथा तमः. इसका कि भगवान क्या कह रहे हैं कि एनीथिंग इन दिस मटीरियल वर्ल्ड which is not related directly to me is useless. Tat vidya atmano mayam yatha bhasho yatha tama. It is like a shadow in the darkness. Anything that is not related to me is like a shadow in darkness. There is everywhere is a shadow in the darkness. It's no use. It is useless. Anything which is not related to me is useless. Now, when we say a dead body, a body is dead, as soon as the body dies, we don't want to touch them because it is useless. It has got nothing to do with Krishna anymore, because it cannot fulfill any more purpose right now. है ना? तो हम लोग उसको touch नहीं करते हैं, because it is considered a material thing, because it's a material body. Similarly, हमारी जो भक्ति है, because we are in this material world, we have to deal with material energy, है ना? तो डेथ के बाद 2 चीजें होती है. साइंटिफिकली देखा जाए तो बॉडी स्टार्ट्स डिकम्पोजिंग, एंड देयर इज अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डेड टिश्यूज, एंड जो हमारे जो टिश्यू जब खत्म होते हैं, इट releases a kind of gas which is actually not good for us, है ना? This is a scientific reason, because when the bacteria and everything in our body, all the cells, they're decaying. The body cells, the skin cells are decaying, the tissues are decaying, everything is decaying in our body. As soon as the decaying starts, it is not considered to be very clean, है ना? So that's why
we are not allowed to. Scientifically, we are not allowed to. Dead body is considered to be very dirty, full of germs, and that is the scientific reason for it. है ना? लेकिन जो लोग नॉन डिवोटी हैं, they will not understand giving water to the dead relatives. Now, the thing is, यहाँ पर एक रिचुअल है जिसमें each family member pours out a pot full of Ganges water for the departed soul and walks in a procession with the ladies in front. ठीक है? अब pot full of Ganges water जो हम डालते हैं, we are actually praying for Ganga Ma to purify the departed soul from all the anarthas, and if there are any material impurities जो उसमें रह गई हैं, please clean that. What are the material impurities? कोई बता सकता है? What are the material impurities still in the body or in someone who has already passed away? Anybody? What are the impurities? What are the possible impurities that a person is carrying after he leaves his body? आफ्टर लिविंग द बॉडी हाँ, तो वो क्या कैरी करता है अपने साथ? कौन सी impurity कैरी कर रहा है जिसको हम गंगा के पानी से धोने की कोशिश कर रहे हैं? वो मन बुद्धि अहंकार. परफेक्ट, परफेक्ट. सो हमारा जो मन बुद्धि अहंकार है, दे आर मटीरियल. ठीक है? हमारे बहुत सारे कलमश हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं हमारे मन में, हमारी बुद्धि में, और हमारे अहंकार, जो हमारा अहंकार है वो क्या है? मिथ्या अहंकार है. सो ये जो अनर्थाज हैं, इन मन बुद्धि और अहंकार में हमारा जो वो है ना, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये सारा का सारा मटीरियल है. और क्योंकि हमारा मन बुद्धि और फॉल्स ईगो, ये तीनों भी मटीरियल है, तो ये सारा मटीरियल जो इम्प्योरिटीज होती हैं, दे रिजाइड इन आर सटल बॉडी विच इज माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो. ये हमारी जो सटल बॉडी है, ये आत्मा के साथ जाती है, और उसमें उसको प्योरीफाई करने के लिए और प्रे करने के लिए हम गैंजेस डालते हैं. अब यहाँ पर किसी नॉन डिवोटी को या फिर किसी ऐसे बंदे को बताओ कि बोले व्हाई दे आर ऑलरेडी डेड, हाउ इज दिस गोना हेल्प? वो इज गोना हेल्प बिकॉज गंगा जो गैंजेस है, इट इज अ सटल, इट हैज गॉट टू एस्पेक्ट्स ऑफ गैंजेस. वन इज अ सटल एस्पेक्ट and one is a gross aspect. Gross aspect of Ganga is when we can physically see the water, and the subtle aspect of Ganga is when the energy of Ganga, which is actually the energy of Lord, है ना, जो गंगा है, it has an energy. और when we are actually offering, सुबह सुबह हम लोग नहाते हैं, if we actually even remember Ganga, so we get the benefit of having using Ganga water to have shower in the morning. We can do that क्योंकि गंगा जो है, इसको जो सटल फॉर्म है, it can be used in a subtle form just through our mind, है ना. ये इसकी पोटेंसी है. और ये किस लिए है इसकी पोटेंसी? बिकॉज हमारे शास्त्रों में दिया हुआ है. नाउ देयर इज वन थिंग दैट आई कुड नॉट फाइंड. मैं जब इसको प्रिपेयर कर रहा था, ना ही किसी ने बोला, ना ही श्रील प्रभुपाद के लेक्चर में था, ना ही वी डोंट नो व्हाई द लेडीज आर फॉलोइंग देयर, व्हाई द लेडीज आर इन द फ्रंट, वी डोंट नो, है ना. सो मैंने गूगल भी करके देखा, आई कुडंट फाइंड एनीथिंग, है ना. सो आई डोंट नो व्हाई लेडीज वर इन द फ्रंट, बट देर आर सम. सो जो लास्ट राइट रिचुअल्स होते हैं ना, उसमें औरतों का काम कम ही होता है वैसे, इन द सेंस कि जब पिंडदान वगैरह करते हैं, यूजुअली मेन करते हैं, और एक्चुअली अगर किसी उनके घर में कोई मेन नहीं हो तो विमेन कर सकती हैं, वरना मेल करते हैं. और जो दाह संस्कार होता है, उसमें भी औरतों को अलाउड नहीं होता है ना. लेकिन उसके अलावा जितने भी सटल रिचुअल्स होते हैं, जिसमें हम लोग आत्मा की शुद्धिकरण की बातें करते हैं और आत्मा को शांति की बात करते हैं, उसमें सब में विमेन आर एट द फ्रंट, है ना. आई डोंट नो द रीजन व्हाई. फिर तो शिला प्रभुपाद यहाँ पर एक और चीज बता रहे हैं कि पांडवास फॉलोड द रूल्स, है ना, 5000 साल पहले भी, जबकि उनके साथ लॉर्ड कृष्णा साथ में थे, उन्होंने भी फॉलो करा. व्हाट डज दैट टेल अस? इट टेल्स अस वन वेरी सिंपल थिंग. You know, when people like Pandavas, who were the most powerful, most righteous, most intelligent, and the most powerful devotees, like they have bhakti ki power bhi bahut zyada thi unme. If they can follow the custom, then we have to follow. You know, Mahajan yene gatah sapantha. Whatever
you know, most influential people do, seniors do, juniors follow. इसीलिए हमारे, देखो देखा जाए तो जैसे हमारा जो अ, अ, हमारा जो एसोसिएशन है आजू बाजू में जो हम देखते हैं, वी फॉलो द सीनियर्स, है ना। अगर हम लोग, हमारे जो सीनियर डिवोटीज हैं हमारे आसपास में जो है मंदिर में हम जिनसे मिलते हैं, इफ दे आर डूइंग समथिंग रॉन्ग वी विल स्टार्ट डूइंग दैट थिंग रॉन्ग, है ना। और इसीलिए हम लोगों को क्या करना है, अगर हम ऐसी पोजीशन में हैं, किसी ऐसी पोजीशन में हैं, व्हेन पीपल आर फॉलोइंग अस, इट इज आवर ड्यूटी कि हमारा जो बिहेवियर है, हमारा जो कंडक्ट है, इट हैज टू बी हाईएस्ट स्टैंडर्ड, बिकॉज महाजन ये ने गतः सपंथा, कॉमन पीपल विल फॉलो, you know, the senior people. So that's what Srila Prabhupada is trying to say. Let's go to the next one. 1.8.2. Te niniyodakam sarve vilapya cha bhrushan punaha aplupta haripada jarjah puta sarijjale. Having lamented over them and sufficiently offered Ganges water, they bathed in the Ganges, whose water is sanctified due to being mixed with the dust of the lotus feet of the Lord. And अभी हम लोग, आप लोगों को पता होगा कि we just had वामन द्वादशी last month, इस मंथ में ही थी, जिसमें नहीं, लास्ट मंथ वामन द्वादशी थी, जिसमें वामन देव ने व्हेन ही वाज, दो उन्होंने 3 कदम मांगे थे वामन देव ने, जब वो दूसरा कदम लिया उन्होंने, तो उन्होंने सारी की सारी 2 कदम में सारी की सारी मटेरियल वर्ल्ड उन्होंने कवर कर लिया। सो उनका जो नाखून का, पैर का नाखून था, वो विराज रिवर पे लग गया, और वहां पर मतलब जो जो मटेरियल वर्ल्ड जहां पर खत्म होता है ना, उस पर टच करा, तो वहां से जो पानी था, है ना, जो मटीरियल स्पिरिचुअल वर्ल्ड का पानी था, वो वहां से गिरा, अंदर आया मटेरियल वर्ल्ड में। वो जो पानी है, बिकॉज वो भगवान के चरणों से टच था, इट बिकेम गंजेस, है ना। तो बिकॉज ऑफ दैट द गंगा इज वेरी प्योर। नाउ हमारे शास्त्रों में भी बताते हैं कि गंजेस जो है, गंगा माँ जो है, वो भी बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि कहते हैं कि इस कलयुग में इतने पाप हैं कि गंगा को भी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, इतनी सारे पाप कैसे धोएं। तो श्रीमद् भागवतम के सेकंड कैंटो में एक बहुत अच्छा, थर्ड कैंटो में, शायद थर्ड कैंटो में एक बहुत अच्छा वर्स है। एक सेकंड में कोई क्या था वो वर्स, क्या था, हमारे भक्ति वैभव में था एक वो वर्स, भूल गया। एनीवे, सो वर्स में कहते हैं कि उस वर्स का मतलब क्या है कि हाउ डज गैंजेस गेट प्योरिफाइड। गंगा तो प्योर है ही, लेकिन इतने सारे पाप धोते हैं, तो गंदगी जो गंगा में होती है वो कहाँ चली जाती है। हाउ डज गंगा रिलीव्स हर बर्डन ऑफ ऑल द सिंस। तो उसमें बताया है कि जो प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड हैं, व्हेन दे बेथ इन गंगा, देन गंगा गेट प्योरिफाइड, है ना। सो दैट इज द ब्यूटी अबाउट प्योर डिवोटीज, है ना। दिस इज हाउ पावरफुल प्योर डिवोटीज आर. By them taking bath in Ganga, Ganga gets purified, and that's what Ganga Ma is actually talking about in Srimad Bhagavatam as well. We'll study it soon. 1.8.3. Tatrasinam kuru patim dhritarashtra sahanujam Gandharim putra shokartam pratham krishnam cha madhava. There sat the king of Kurus, Maharaj Yudhishthir, along with his younger brothers and Dhritarashtra, Gandhari, Kunti, and Draupadi, all overwhelmed with grief. Lord Krishna was also there. Purport padega koi? मैं रीड करता हूँ बाबूजी। Please. The battle of Kurukshetra was fought between family members, and thus all affected persons were also family members like Maharaj Yudhishthir and brothers Kunti, Draupadi, Subhadra, Dhritarashtra, Gandhari and her daughter-in-laws, etc. All the principal dead bodies were in some way or other related with each other, and therefore the family grief was combined. Lord Krishna was one of them, as a cousin of the Pandavas and nephew of Kunti, as well as brother of Subhadra, etc.
The Lord, therefore, was equally sympathetic towards all of them, and therefore he began to pacify them befittingly. Yes. So यहाँ पर हाँ, यहाँ पर सॉरी सॉरी यहाँ पर क्या हो रहा है कि अब सब लोगों को उन्होंने जो भी था उन सारे जो रिचुअल्स थे वो सारे कर लिए। अब भगवान जो है, भगवान क्या कर रहे हैं, ही इज ट्राइंग टू पेसिफाइंग बिफिटिंगली। देखो, शिल प्रभुपाद इज सच एन अमेजिंग writer of purports. He actually telling us how, when it says Krishna was also there, he was there. अब सोचो, he has given 45 minutes में he has given the whole Bhagavad Gita to अर्जुन, है ना। और किस किस ने सुनी वो भगवत गीता? एक तो सुनी संजय ने, है ना, और सुनी धृतराष्ट्र ने, है ना। सो दे लिसन टू भगवत गीता। इन लोगों ने, इन तीनों ने भगवत गीता सुनी। नाउ यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण दोबारा भगवत गीता नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? उसका बहुत सारे रीजन है। बहुत सारे हमारे जो आचार्य हैं बहुत सारे रीजन देते हैं इसके। वन ऑफ द फर्स्ट रीजन इज कि भगवान श्री कृष्ण ने एक तो भगवत गीता बोल दी है, एंड भगवत गीता वाज नॉट स्पोकन फॉर अर्जुन, भगवत गीता वाज स्पोकन फॉर अस। ऑल ऑफ दीज पीपल, मोस्ट ऑफ दीज पीपल आर ऑलरेडी प्योर डिवोटीज, है ना। यहां पर कृष्णा इज शोइंग अस अनदर साइड ऑफ हिम, है ना। पहला साइड हम लोगों ने देखा था, बिकॉज ही वाज टीचिंग अर्जुना एज ए गुरु। हम लोगों ने अपने भक्ति वृक्षा में क्या पढ़ा अभी कि वो जो वर्ष था उसमें भगवान वो अर्जुन क्या बोलता है? कार्पण्य दोषो अपहत स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता ये श्रेयस्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यास्तेहम शाधि माम त्वाम प्रपन्यम। तो अर्जुन क्या बोल रहा है? आई एम योर शिष्य, है ना। इसमें वर्ष में हम लोगों ने अभी फ्राइडे को जो देखा था उसमें कहता है शिष्यास्तेहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। प्रपन्नम का मतलब होता है सरेंडर। आई एम द सोल सरेंडर ऑन टू यू, है ना। और वो किस लिए? कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव। कार्पण्य, है ना, हम बिविल्डर हो गया था कैसे? दोषों के कारण। कौन सा दोष? बिकॉज ही इज अ क्षत्रिय बट ही कैन नॉट, ही इज अनेबल टू फुलफिल अ क्षत्रियस ड्यूटी टू फाइट। दैट्स व्हाई ही इज सेइंग ये मेरा एक दोष है। और जो बिविल्डरमेंट मेरे पास आ रहा है ये इसलिए है बिकॉज आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट फॉर मी। सो नाउ आई एम सरेंडरिंग ऑन टू यू, आई एम योर डिसाइपल, प्लीज इंस्ट्रक्ट मी, है ना। ना ये जो हम लोगों ने पढ़ा था कि अर्जुन इस जब भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता पढ़ रहे थे, बोल रहे थे, ही वॉज स्पीकिंग टू अर्जुन एज अ गुरु, है ना। नाउ ये जो सेटिंग है, ये जो सेटिंग हम लोग अभी देख रहे हैं जहाँ पर सारे लोग देर ऑल ट्राइंग टू यू नो लास्ट राइट्स कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। कृष्णा इज नॉट trying to be a guru of anyone. He's trying to be a relative. And one of the expectations of a relative is, first expectation of a relative is to understand who I am. Like for example, if I say someone is my relative, Srila Prabhupada बोलते हैं, for a relative, what I need to understand is someone is my relative. I have to understand and accept them as they are, है ना। और दूसरी चीज क्या होती है? Respect their beliefs. We don't have to accept their beliefs, but we have to respect their beliefs, है ना। और जो तीसरी चीज शिला प्रभुपाद बोलते हैं, पहले तो एक्सेप्ट करा, उसे रेस्पेक्ट करा their beliefs, and the third is to give them love from your side and give them love of Godhead. When we can do these four things, they are our relatives, otherwise they are not, है ना। These are the four things you have to do to a relative. Now, the problem with this whole thing is, when we are talking about this, the problem with this is, what happened? अरे वो क्या हुआ?
I think I lost the screen. Sorry guys. Wrong screen. Oh yeah. Wrong one. Sorry guys. हाँ, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि ही इज ए रिलेटिव, दे वर ऑल रिलेटेड टू ईच अदर। तो शिला प्रभुपाद क्या बोलते हैं कि जब फैमिली ग्रीफ में होती है तो वी नीड टू हेल्प देम कम आउट ऑफ दैट ग्रीफ, है ना। और शिला प्रभुपाद इसमें बोलते हैं लेकिन आजकल के जमाने में क्या होता है कि व्हेन समवन इज ग्रीविंग, है ना, वी गो एंड गिव देम मोर ग्रीफ। अरे यार तुम्हारे यहाँ पर देखो 13वीं का खाना है, यहाँ पर नमक नहीं है खाने में। सी दे गिविंग मोर ग्रीफ टू पीपल, ठीक है। तो शिला प्रभुपाद कहते हैं आजकल के जमाने में, पहले के जमाने में ये था कि बिकॉज कृष्णा was trying to tell us how to be a relative, है ना। He was not giving them hard time saying that hey you are the soul, you are not the body, don't worry about जो मर गए वो तुम्हारे कभी थे ही नहीं, ये और वो whatever he spoke in Bhagavad Gita, he was not speaking, he was just trying to pacify them befittingly। जब अर्जुन के बेटे का अभिमन्यु का वध हुआ था तो अर्जुन वॉज क्राइंग एंड हाउलिंग एंड स्क्रीमिंग, और कृष्णा भी वहीं थे, उन्होंने जाके थप्पड़ नहीं मारा। अरे तेरे को अभी तो सुनाया था यार, दो दिन पहले तो तेरे को मैंने पूरी भगवत गीता सुनाई थी और तूने बोला तेरे को समझ में आ गया, अब वापस तू रो रहा है, व्हाई यू स्क्रीमिंग, व्हाई यू क्राइंग, ऐसे कुछ नहीं बोला। ही वेंट एंड गेव हिम अ हग, है ना। He did not start to tell him, oh, it's not the body, the soul, तेरे को तो समझ में आ जाना चाहिए था, what are you doing? Nothing. So we need to be first। हमारे साथ क्या होता है, especially हमारे भक्ति में the problem happens when we forget to be a human being। We want to be pure devotee before we become a human being। Oh no, I know what happened। So we need to become a human being before we become a pure devotee and even a devotee, है ना। So as a human being we need to pacify, and that's why even this bhakti vraksha, we may not be a relative in terms of bloodline, but we are actually relatives as comes to, that's why we call each other guru bhai, guru bhan, which is a relation। So we need to respect each other. We need to make sure we are accepting each other. We need to accept each other's folly as well, है ना। Number 4, सांत्वयामानस मुनिर्भिर सांत्वयामास मुनिभिर हतबंधून सुचार्पितान भूतेषु कालस्य गतिम दर्शयन् प्रतिक्रियाम्। Citing the stringent law of Almighty and their reaction upon living beings, Lord Sri Krishna and the Munis began to pacify those who were shocked and affected. Who wants to read the purport? I can read, Prabhuji. Please. The stringent laws of nature under the order of the Supreme Personality of Godhead cannot be altered by any living entity. The living entities are eternally under the subjugation of the Almighty Lord. The Lord makes all the laws and orders, and these laws and orders are generally called dharma or religion. No one can create any religious formula. Bona fide religion is to abide by the orders of the Lord. The Lord's orders are clearly declared in the Bhagavad Gita. Everyone should follow him only or his orders, and that will make all happy, both materially and spiritually. As long as we are in the material world, our duty is to follow the orders of the Lord. And if by the grace of the Lord
we are liberated from the clutches of the material world, then in our liberated stage also we can render transcendental loving service unto the Lord. In our material stage, we can see neither ourselves nor the Lord for want of spiritual vision. But when we are liberated from material affection and are situated in our original spiritual form, we can see both ourselves and the Lord face to face. Mukti means to be reinstated in one's original spiritual status after giving up the material conception of life. Therefore, human life is specifically meant for qualifying ourselves for this spiritual liberty. Unfortunately, under the influence of illusory material energy, we accept the spot life of only a few years as our permanent existence and thus become illusioned by possessing so called country, home, land, children, wife, community, wealth, etc., which are false representations created by Maya illusion. And under the dictation of Maya, we fight with one another to protect these false possessions. By cultivating spiritual knowledge, we can realize that we have nothing to do with all this material paraphernalia. Then at once we become free from material attachment. This clearance of the misgivings of material existence at once takes place by association with the Lord's devotees, who are able to inject the transcendental sound into the depths of the bewildered heart and thus make one practically liberated from all lamentation and illusion. That is a summary of the pacifying measures for those affected by the reaction of stringent material laws exhibited in the forms of birth, death, old age, and disease, which are insoluble factors of material existence. The victims of war, namely the family members of the Kurus, were lamenting the problems of death, and the Lord pacified them on the basis of knowledge. Hare Krishna. हरे कृष्णा। सुबह हम लोग पढ़ते हैं ना, ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो गुरु होता है, गुरु अज्ञान का तिमिर, तिमिर का मतलब होता है अंधकार। ओम अज्ञान, अज्ञान का जो अंधकार है धस से उसको खत्म करता है, ज्ञानांजन शलाकया, है ना। ज्ञान का जो दीपक से वो हमारे अज्ञान के अंधेरे को खत्म करते हैं। और कौन करता है? तस्मै श्री गुरुवे नमः। और ये जो पर्टिकुलर वर्स है, ये जो परपोट है, आई वुड लाइक यू गाइस टू रीड इट अगेन, यू नो, व्हेन यू हैव टाइम। आई हैव पुट दिस purport as a favorite in my Vedabase. क्यों? क्योंकि कई बार मैं इसको पढ़ता हूँ, क्योंकि it gives us a little bit of more understanding of what it is, है ना। हमारी प्रॉब्लम इसमें लाइफ में क्या होती है कि एक वर्स है भगवत गीता का, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते, है ना। क्या होता है? प्रकृते क्रियमाणानि, प्रकृति जो है, जो मटीरियल नेचर है, जो मटीरियल एनर्जी है, जो भगवान की शक्ति है, मटीरियल एनर्जी है, प्रकृति क्रियमाणानि, और वो वही सारी की सारी चीजें कर रही है, गुणे कर्माणि सर्वसा, गुण और कर्म के हिसाब से वो सारी की सारी चीजें कर रही है। कौन कर रही है? मटीरियल एनर्जी। लेकिन अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार, हम लोग जो हैं, आत्मा जो है, उनको अहंकार होता है। हमें क्या लगता है? कर्ता अहम इति मन्यते, हमें लगता है मैं ही कर रहा हूँ ये सारी चीजें, है ना। जब ये प्रॉब्लम हो जाती है, देन वी स्टॉप लुकिंग फॉर गॉड्स हैंड इन आवर मिजरीज, है ना। in last few days, I have realized, we can try and control everything, try and control or put, material measures or even so-called spiritual measures. According to us, they may be material, lekin we cannot control what outcome that will come, All we have to do is we have to understand that material energy is actually at a play. गुण और कर्म के हिसाब से, सदगुण रजगुण तमगुण के इफेक्ट में आके, मतलब मटीरियल एनर्जी सदगुण रजगुण तमगुण को यूज करके हम लोगों की मति भ्रष्ट कर देती है, एंड वी स्टार्ट थिंकिंग दैट द होल वर्ल्ड शुड रिवॉल्व अराउंड मी, और नॉट इवन जस्ट होल वर्ल्ड शुड रिवॉल्व अराउंड मी, होल वर्ल्ड शुड अंडरस्टैंड दैट आई एम राइट, है ना।
Actually, when we think about the whole world should understand that I am right, this sentence that we are saying in itself is a false ego. है ना? Because humility means what can I do to understand whether I am right or wrong? We've already made a decision that I'm right. है ना? If we already made a decision that I'm right, then what will happen? Everything else that doesn't support this thing is wrong. है ना? For example, मेरी मम्मी है, उनके पास ना फोटोक्रोमेटिक ग्लासेस हैं, ठीक है? तो नाउ व्हाट हैपेंस इज, हम लोग उनको ठंड थी तो हम कहीं ले जा नहीं पाए, लेकिन फिर भी देयर वाज वन डे इट वाज वेरी सनी, तो मैं मम्मी को अल्टोना बीच के पास में वी स्टॉप द कार एंड वी वर लुकिंग एट द बीच एंड एंजॉयिंग इट. मम्मी बोलती है व्हाट ए ब्यूटीफुल ग्रीनिश पानी. मैंने कहा नहीं, ग्रीनिश तो नहीं है पानी. तो फिर मम्मी ने बोला कि इतना काई जमी हो क्या इस पे? तो फिर मैंने कहा नहीं मम्मी, काई तो नहीं है. फिर मैंने मम्मी को देखा, मेरे को समझ में आ गया, उनके फोटोक्रोमेटिक ग्लासेस है, उनकी जो शेड आता है वो आता है हल्का सा ग्रीनिश है. तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी आपकी ग्लासेस है, थोड़ा सा हटा के देखो. देन शी सॉ इट एंड शी गोस ओ यस. ठीक है. नाउ मेरे पास एक ऑप्शन था उस वक्त, मेरे पास ऑप्शन था मम्मी आप गलत कह रहे हो, यू आर रॉन्ग, आई एम राइट, इट्स नॉट ग्रीन, इट्स एक्चुअली ब्लू ब्लू. तो मम्मी कहती नहीं बेटा इट्स रॉन्ग, यू आर रॉन्ग बिकॉज आई कैन सी इट्स ग्रीन. है ना? humility means humility does not mean that I should tell everyone that I'm right. Humility means I may be right, I need to find out where is other person looking from so that I can understand their perspective. अगर हमने already decide कर दिया है कि my perspective is right, then we will look at any other perspective, it doesn't meet my perspective, will be wrong, automatically wrong. है ना? Like my mother. सो हमारे साथ क्या होता है? फॉल्स ईगो यूजेस सतगुण, रजगुण और तमोगुण टू ब्लाइंड अस और टू डिस्टॉर्ट द इमेज. एंड एवरीबडी इज डीलिंग विद, एक बंदा सतोगुण में बैठा है ना? एक बंदा बुरी तरीके से रजोगुण में है, वो कहता लड़, मेरे से लड़ना, तेरे को मेरे से लड़ना पड़ेगा. जो सतोगुण में बैठा है, मेरे को नहीं लड़ना है यार, आई एम ऑल गुड, कहता नहीं तेरे को लड़ना ही पड़ेगा, तेरे को लड़ना ही पड़ेगा. एंड देन दिस सतो जो रजोगुण वाला बंदा है, ही डजंट अंडरस्टैंड, बोले यार ये आदमी मेरे से लड़ क्यों नहीं रहा है? इज ही डम? इज ही रियली स्केर्ड? वो डरपोक है, ही इज ए चिकन, वो हु इज ही? बट ही डजंट अंडरस्टैंड, ही इज नॉट चिकन और एनीथिंग, ही जस्ट डजंट वांट टू फाइट बिकॉज ही इज इन मोड ऑफ सतोगुण. आई रिमेंबर आई यूज्ड टू हैव अ फ्रेंड, है ना, अर्जुन चौधरी, एंड ही वाज लाइक ह्यूज, लाइक मतलब उसका जो हाथ था, वो जो उसका मेरा हाथ के सामने वो हाथ रखता था ना, तो उसका इतना इतना चौड़ा हाथ था. सो ही वाज लाइक ए ह्यूज, लाइक ए he was जाट and he was like really well built, इतने बड़े बड़े उसके shoulders थे, and he was very well built, like very, and he was extremely powerful. तो इतना powerful कि he can lift a van from the front, ऐसे ना उठा लेता था van को, when he was in 11th class, है ना, 11th 12th में. Anyway, so he was very powerful. तो कई बार क्या होता था कि मैं ऐसी, मेरी उसकी कभी लड़ाई हो जाती थी तो मैं उसको मारने के लिए भागता था. सो इमेजिन मैं एकदम पतला दुबला सा छोटा सा, एंड ही इज लाइक ह्यूज बिल्ड. तो यू नो व्हाट ही यूज्ड टू से, तो मैं उसको कहता था क्यों डरपोक, डर रहा है, अब तेरी ताकत कहाँ गई सारी, ऐसे बोलता था, मतलब उसको उकसाने के लिए. तो कहता था मेरे को ताकत है मेरे में, लेकिन तेरे जैसे मच्छर पे वेस्ट करने के लिए नहीं है ना? Because at that moment I might be in mode of passion, but he was in a mode of goodness. नहीं लड़ना है मेरे को तेरे को. तो मुझे वो बोलता था मैं मारूंगा तो मर जाएगा, कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं चुपचाप खड़ा हूँ, तेरे को मारना है तुझे, मुझे ऐसे करके खड़ा हो जाता था पीछे हाथ, बोले मार ले तो मुझे, और मैं उसको मारता भी था, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता था. लेकिन कहने का मतलब ये है कि जस्ट बिकॉज वी हैव फॉल्स ईगो, वी लुक एट थिंग्स डिफरेंटली. हम भूल जाते हैं कि वी आर ऑल प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशा. हमें क्या लगता है, आई शुड कंट्रोल हाउ पीपल आर थिंकिंग अबाउट पर्टिकुलर थिंग्स. ठीक है, अगर मेरे को लग रहा है कि आई एम 100% करेक्ट, आई विल स्पीक टू 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, तब तक मैं बात करता रहूंगा until I find 1% जिसको बिल्कुल मेरी जैसी थिंकिंग है. वो एक्चुअली मेरी जैसी थिंकिंग नहीं है, उसका वही रजोगुण या तमोगुण में जो होंगे उनको मेरी बात, अगर मैं रजोगुण तमोगुण में हूं
तो मैं खूब सारे लोगों से बात करूंगा, लेकिन जिसने मुझे बोल दिया यू आर राइट, मैं बोलूंगा ही इज राइट एज वेल। बाकी सबसे मैंने पूछा दे आर ऑल रॉन्ग। दैट्स नॉट करेक्ट एक्चुअली, है ना। सो शिला प्रभुपाद यहाँ पर एक बड़ी अच्छी सी चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लॉज ऑफ नेचर हैं दे आर वेरी स्ट्रिंजेंट, यू कैन नॉट ब्रेक देम, देयर इज नो एक्सेप्शंस, लाइक लिटरली नो एक्सेप्शंस, है ना। और कोई भी लिविंग एंटिटी उसको हिला नहीं सकता उन लॉज को। और उन लॉज को क्या बोला जाता है, उस जो लॉ एंड ऑर्डर जो भगवान ने बनाया, जो उन्होंने लिखा है ये कर सकते हो ये नहीं कर सकते हो, दीज आर कॉल्ड धर्म। इसको कहते हैं हम लोग इंग्लिश में, उसको हम लोग रिलीजन कहते हैं, है ना। अब रिलीजन हम लोग जिसको फेथ, एक होता है रिलीजन, एक होता है रिलीजियस फेथ। रिलीजियस और स्पिरिचुअल फेथ जो होता है, जैसे क्रिश्चियन है ना। क्रिश्चियन इज नॉट, क्रिश्चियनिटी इज इज अ फेथ, ठीक है, इज अ फेथ, ठीक है। उसको हम, और जो रिलीजन होता है, एक्चुअल रिलीजन जिसको धर्म कहा जाता है, धर्म इज एक्चुअली कंप्लीटली डिफरेंट। धर्म का मतलब होता है अ लॉ मेड बाय गॉड। सो जो भी भगवान के बनाए हुए लॉज को फॉलो कर रहा है वो धर्मनिष्ठ है, जो नहीं कर रहा है वो अधर्मी है। वी कैन नॉट जनरेट दोज रिलीजियस थिंग्स इन आर, जैसे देर इज अ रिलीजन पीपल कॉल्ड, आप लोगों ने किसी ने सुना है साइंटोलॉजी? हैज एनीवन हर्ड ऑफ इट? देर इज अ Yes, रिलीजन Prabhu. कॉल्ड साइंटोलॉजी, आपने पढ़ा सुना है रुचिता माता जी? Yes. हाँ, जैसे अपना जो है ना, ये क्या नाम है इसका, मिशन इम्पॉसिबल में कौन है, व्हाट वाज हिज नेम? Tom Cruise. टॉम क्रूज। टॉम क्रूज इज अ साइंटोलॉजिस्ट, है ना। He does not believe in God, he believes in science. Science is God. Now जो Scientology है, this is absolutely ridiculous. That's not religion. They can call it a Scientology religion, but it's not a religion. Religion is which is actually commanded by God. So Islam is a religion. All the Abrahamic religions, they are all religions. Buddhism is a religion, ठीक है। और अपना सनातन धर्म इज अ रिलीजन, ठीक है। और Sikhism is a religion because Sikhism is not based on a person. Sikhism is based on scriptural references and they use Sanatan Dharma ke scriptures anyway, है ना। और it's coming from the Guru. So यहाँ पर we cannot create it. Scientology उनको लगा कि हमने खुद ही लिख दिया रूल्स, ये होता है, ये धर्म है। That is not dharma. That is stupidity. है ना, that's not dharma. That's just you have an organization, उनके कुछ rules and regulation है. That's not religion. That's just an organizational rules. Religion means laws made by God, ठीक है। So अगर हमें खुश रहना है तो वी नीड टू फॉलो दोज ऑर्डर्स। जो उनको ऑर्डर्स को फॉलो करेगा दे विल बी हैप्पी, जो नहीं करेगा नॉट बी हैप्पी, है ना। ये हम लोगों को, सब लोगों को पता है, ये हम लोग बचपन से हम लोगों को सिखाया गया है ये सब चीजें, ठीक है। शिला प्रभुपाद उसके बाद इसमें एक और चीज बता रहे हैं कि इफ वी वांट टू बी स्पिरिचुअली हैप्पी वी हैव टू फॉलो द रूल्स, बट इफ यू वांट टू बी मटेरियली हैप्पी देन व्हाट? कोई बता सकता है व्हाट डू वी हैव टू डू इफ यू वांट टू बी मटेरियली हैप्पी? डू वी फॉलो or it's okay not to follow? Yes, anyone? No, what is the question? एक बार फिर से बोलिए. मैं कह रहा हूँ कि शिला प्रभुपाद बताते हैं कि in order for us to be spiritually happy we have to follow the laws of the Lord. But if you want to be materially happy, does it still mean we have to follow the Lord or it's okay not to follow the Lord? Yes, you have to follow I it. think if we follow the laws, तो materially भी automatically खुश रहेंगे. This is what I think. Exactly If right. spiritually happy, तो material happiness अपने आप आ जाती है. You are absolutely right and Mitul Prabhu, you are absolutely right as well. देख इसमें क्या लिखा है, everyone should follow him only or his orders and that will make them happy both materially and spiritually. So ये important है। हमें क्या लगता है, कई बार आप लोगों ने सुना होगा, कई बार आप लोगों ने सुना होगा, some people say, you know, यार मेरे को स्वर्ण माता जी आपका क्वेश्चन है, आस्क। नो प्रभु जी, क्वेश्चन नहीं है। आई मीन आई फील कि अगर हम वो लॉस फॉलो करते हैं तो हमारे मटेरियल हैप्पीनेस के पैरामीटर्स और डेफिनेशंस भी चेंज होने लग जाती हैं। ओह सो यार, सो सो
मटेरियलिस्टिक हैप्पी होना ये नहीं है कि हम कुछ भी नहीं फॉलो कर रहे हैं और हमारी अपनी डेफिनेशन है वो अलाइन होने लग जाती हैं. बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही बोला. आई थिंक This is beautiful point, Suvarna Mataji. very nice, very nice. I think it is very, very important for us to understand if we start following the laws of Lord, we are actually in alignment with we are not flowing away from the flow, like we are not going against the flow of the river. We are flowing with the river. तो क्या होगा? Every kind of endeavor will give us success. Now, when I say success, doesn't necessarily means that it means that the ultimate success will be there. भले ही हमें थोड़े से problems आए, we are following the rules. For example, if I want to follow the rule, I don't want to wear leather. Like for example, I don't want to use leather so that but अगर मैं अगर मैं Uber करता हूँ and I'm sitting down in a Uber, उसमें leather seats है, does it mean I should get off? No, it doesn't, because I'm not going out of my way to do something which I don't believe in, है ना? So when we start doing these things, somehow or other, हमारे जो material aspirations होते हैं, they start aligning with the spiritual laws, and automatically happens, and that is what is called organic way of getting to detachment. Problem वहां हो जाती है when people started imposing their bhakti on everyone around them and make them choke to death, spiritual death जिसको कहते हैं, है ना? That means it's brilliant to be happy, it's brilliant to be detached, but showing off your detachment is wrong. कि भाई you are showing off detachment, because if you want to get someone else into bhakti, कोई बता सकता है if I want to bring lot of people to bhakti, what is the prescribed thing that I need to do? Accept the way they are. Perfect. Beautiful. And we should also feel that it's okay to be vulnerable in front of our mentor so that if we are open, then only we can change. If we are just pretending that we are following this way and that way, but the change is not coming internally, then it is just a show off and just a temporary thing. Beautiful. Fade away. Also भाई आचरण, प्रभु जी आपका कैसा आचरण है, आप कैसे आपके बिहेवियर है, उससे लोग भक्ति में आते हैं. Beautiful. So you have to set by example, like not just saying. Yeah, beautiful. I was talking to someone and I was saying that मेरी जो wife है, she is not a Krishna devotee, है ना? And she does not follow the 4 regulative principles, ठीक है? And I am with her company 24/7. ठीक है? I'm with her 24/7. Now, what does that mean? That means मैंने first few years of my bhakti, which is around 2012-13, you know, I have given her an absolute hell of a time, really bad time, because I was trying to, मेरे को समझ में आ गया था कि I'm in a right path. I still know that I'm on a right path. But उस समय I was so adamant that I wanted to control her. I wanted to give her bhakti. I wanted to tell her that you are absolutely wrong. You're going to go to hell. But instead of thinking in my head, I used to say it. And imagine living with a person like me who is constantly nagging her that all you're doing is you're doing everything wrong and you are a wrong person and you are going to hell. It was really hard for her, and somehow I think I broke her in those few years. But I realized one thing, that the only way I can inspire her to grow in bhakti is to show if I am growing in bhakti. And growing in bhakti का first जो है, जिसको बोला जाता है, we should wear this as a necklace around our neck, which is called humility. है ना? Humility का मतलब होता है, humility means I am thinking less about myself. I don't think less of myself. I'm not a bad person. I'm not thinking less of myself.
I'm thinking less about myself. I'm not self-centered person. That is one of the most beautiful definition of humility. And another aspect, उसी humility का aspect है acceptance. To accept people for who they are, not what I want them to be. है ना? है ना? रुचिता माता जी. नहीं, just I want to add one thing, Prabhu. I think Yes. compassion and love also come with humility. And Exactly. either Nice. अगर आप में compassion होगा तो automatically humility भी रहेगी. Exactly. And you know what humility actually means? I am happy to love you no matter what. Swarna Mataji. प्रभु जी मैं ये भी कह रही थी कि आप कह रहे थे कि what is the most required quality for a mentor. So like yes, accepting the way we are, and also every mentee has some level, like they can, and so we someone may be really into material world, or someone is elevated but don't know where to go. So as a mentor, sometimes we need to come down to their levels, do things the way they are, and then bring them from there to that level. So sometimes we may feel that the methods, like as a third person, that the methods are wrong, but they are really not. The mentor is making us feel comfortable, accepted, respected, so that we can be very true, like how we are in front of our mentor, and then we get corrected. True. And one of the examples Srila Prabhupada, आपने बहुत अच्छा बोला माता जी. One of the brilliant examples Srila Prabhupada gives is जब हमारे सामने एक छोटा सा बच्चा आता है, बिल्कुल छोटा सा 1 साल का बच्चा, we don't talk to them as adults. How do we talk to them? अले बेटा आप कैसे हो, थोड़ा सा और खा लो. We talk to them the way they talk, the way they express themselves. We go to their level so that they can connect with us. And same with एक बहुत अच्छी चीज मुझे बताई थी. There was this guy who is Roxy is following on Instagram, and this guy has some amazing tips of how to raise kids, है ना? So one of the things he said was amazing. He said to that, when you're standing up, your son is probably like my son, 6 years old. So he's small. So when I'm talking to him standing up, he looks at me and he actually cannot relate to me. I mean, he thinks that I'm talking down on him. But as soon as I go on my knee, मेरे को अपने आप क्या होता है, एकदम से my voice slows down. You know why? Because now I'm getting down to his level. I'm actually accepting this humility. I'm accepting this necklace of humility. I'm actually accepting him as a small child, and I'm getting down on my knee, and I accept that whoever he is, whatever he is being, I'm okay with it. And now I'm okay to speak to him on his level. So when I go on my knees, मेरा सिर उसके सिर के बिल्कुल बराबर होता है. Then I say, hey, what's up? And then he can instantly connect with me. He can tell me how he feels. He's okay with, and whatever he doesn't feel, he can tell me. But when I'm talking to him standing up, it's hard for him to, because he doesn't know what he can do. He can say which will land with me in the same way. So when I get down to on his level, or same cheez ye thi, if someone is drowning, you cannot lift them up by screaming at them, by teaching them how to swim while they're actually drowning. Sometimes you have to jump in the water. Problem happens, so many people jump in the water and then they realize, अरे मेरे को भी नहीं आती swimming. That is stupidity. Srila Prabhupada के साथ एक बार क्या हुआ? Srila Prabhupada, all these disciples of Srila Prabhupada said, Srila Prabhupada, we're gonna go to nightclub. शिला प्रभुपाद ने बोला हाँ चले जाओ, लेकिन वापस आ जाना है ना. तो उन्होंने बोला क्यों प्रभुपाद? बोले क्योंकि वो बहुत खतरनाक माया नगरी है. इट्स वेरी अट्रैक्टिव, सो मेक श्योर यू गो इन देयर तो कम बैक, नॉट स्टे देयर, है ना. दैट मींस ही इज सेइंग डोंट गेट इंपैक्टेड, है ना. और फिर एक बार क्या हुआ, दूसरा सेट बोल रहा था उनको नहीं सॉरी दिस दे वर गोइंग टू ब्रोथल के लिए उन्होंने हाँ कर दी. फिर काफी टाइम बाद एक और दूसरा ग्रुप बोल रहा था वी कैन गो टू नाइट क्लब. शिला प्रभुपाद ने बोला डोंट गो. तो वो नहीं गए. तो बाद में किसी ने पूछा शिला प्रभु व्हाट इज दिस, डबल स्टैंडर्ड. एक को बोला वो ब्रोथल जा रहे थे फिर भी तुमने बोला वापस आ जाना, और ये लोग गए जा रहे इनको मना ही कर दिया. बोले जिनको मैंने पहले भेजा था आई नो दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअली अलाइंड, they can go there, I know they will come back. But these people, they were still growing in bhakti, they were not matured enough for them to go to a nightclub.
because when they go to the nightclub, they might get so attracted that they, and then Abhi Amog Leela Prabhu gave example of amazing thing, kabaddi. If you have strength, then you can go kabaddi, 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 kabaddi in the other दूसरे पाले में. अगर आप कमजोर हो गए तो दे विल वो दबोच लेंगे, आप हार जाओगे, है ना. और अगर आप बहुत स्ट्रांग हो गए, सारे लोग आप पे चढ़ जाएंगे ना, तो भी यू कैन जस्ट मूव बैक, कबड्डी कबड्डी कबड्डी, एंड यू ब्रिंग एवरीवन बैक. So Srila Prabhupada was that expert kabaddi champion who went into America and got everyone on his shoulders, and he come back to this side, and he brought all of them together. We need to understand where we are. We need to understand, do we have enough strength that I can go to their level? Would I be able to come back? I'm talking about associating with non-devotees. If you think that I can easily come back, then you jump in. But if you cannot, then it doesn't mean that you still judge them. You still give them love and respect, and you stay away from them. Well, let me become stronger, then I'll deal with you. तो हम लोगों को कभी फाइट करनी होती है, we'll see यार वो कितना ताकतवर है. छोटा सा बंदा किसी बड़े से भिड़ जाएगा तो मर जाएगा ना. So we need to understand कि हमारी क्या strength है, and then we can go into the fight. But humility actually means to understand where the people are coming from. One of the corporate world mein, we are taught, I think Suvarna Mataji, you would know, that we were taught how to deal with everyone the way you want to be dealt with. But now it has changed. Spirituality is completely opposite. It says you deal with other people the way they want to be dealt with, not you. क्योंकि मेरे को अगर, if I like coffee, if I go to Mithul Prabhu's house and he gives me milk, that's not making me comfortable because I like something else. So the way Mithul Prabhu needs to treat me is, Brajesh Prabhu, how would you like to be treated? Do you want milk? Do you want what? What do you want? And then I say this, and then you fulfill that. That is called humility, to accept people for who they are and make sure that you still have love and compassion trumps everything. Everything. You cannot become a bhakta if you are hard-hearted. If you have anger, resentment against people, you cannot do bhakti. They do not go together. Stone-heartedness, hard-heartedness, and bhakti cannot go together. You need to have loving, soft heart, and then you can, go in bhakti. All right, we'll stop here. Granthra Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Anybody has any final comments? Any realization they want to share? प्रभु जी, आपने जो डेफिनेशन बताई रिलेटिव की, चार चीजें बताई. एक्सेप्ट हु दे आर, रिस्पेक्ट देयर बिलीफ. No, एक second. Give them love Give of them Godhead. Yeah. Give them love. And give them love of Godhead as well. Give them love. Okay. So there are two different things. Give them love means you give them your love. And then once they actually know that, you love them, then you can talk about Krishna and they will accept it, because now you're giving them Krishna with love. When you start shoving Krishna in their mouth, they will vomit. Cool. Thank you, Prabhuji. Anything else? Prabhu, Yes, Mataji. today I was listening to one of the lectures by Vraj Bihari Das. It's very beautiful point which has been You should going call on. him Braj Bihari Prabhu. His name is Das. Sorry. You should call him Prabhu. Yeah. Sorry Braj. about that. Yeah. Vraj Bihari Prabhu. Yeah. So he was talking about this point, how do you know that it's Krishna's voice or it's our mind's voice? So how Yeah. do you understand that? And Yeah. which actually I was pondering upon for a long time कि कैसे पता चलता है Huh? कि this voice is coming from your mind or from Krishna is himself giving you. Uh-huh. तो उन्होंने कहा फर्स्टली अगर आपकी साधना अच्छी है, आप भागवतम सुनते हो, भगवत गीता पढ़ते हो, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. अगर आप चैंटिंग कर रहे हो, सो द पॉइंट इज कृष्णा की जो आवाज होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है, स्लो Uh-huh. होती है, एंड कृष्णा विल जस्ट टेल यू वंस एंड ही विल नॉट अगेन रिपीट इट. Uh-huh. एंड जो आपकी माइंड की आवाज होती है वो बहुत लाउड एंड फास्ट होती है, इट कीप्स हैमरिंग. So I was realizing this is so true while I'm chanting. कभी कभी distractions होते हैं, and within there was a soft voice which is telling me
continue chanting. And on the other hand, अचानक से आवाज आती है कि अरे कुछ और कर लेते हैं, 2 मिनट ये कर लेते हैं. So then I realized, so beautiful, like actually Krishna is sending us messages. We are not like, we don't have that subtle understanding कि कैसे हम उसको ले पाए. Beautiful. Oh, So beautiful. just wanted to share with everyone. Thank you, Mataji. Thanks for sharing. मैंने सुना हुआ है lecture, but I've forgotten हाँ, about it. So thank you very much. It's amazing to, rehash these things. Love हाँ, it. Very thank grateful. you. I'm gonna sleep with this thought actually. Thank you. Thank you, Rishita Mataji. Actually, we should keep thinking about this every day so that we can listen to him. Like, Yes. it's so important. Because that's the whole idea. We have been listening to our own mind for millions of births. This is the time we should listen to Krishna, na? Cool. Hmm. All right. Shri Prabhupada ki jai, Okay. Samvriddhi ki jai, Vancha kalpatarubhyasya kripa sindhu bhayavcha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu. Hare Hare Krishna. Krishna.